फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल इज द टॉपिक फ्रॉम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज ट्रेपेजोइडल रूल? ट्रेपेजोइडल रूल क्या काम में आता है? सम इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंटीग्रल a to b fx dx from this point to this point, that is a equal to 7.47 and b equal to 7.5 using the trapezoidal rule and from the given data. Now what is the problem? इस बार इंटीग्रेशन फाइंड करने में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है. नाउ यू हैव नॉट एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब लाइक दैट कि जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ. इस बार एक फंक्शन है और उसका डेटा दिया हुआ है और आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. मतलब आपको ये डेटा का यूज करना है एंड यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल. नाउ व्हाट इज ट्रेपेजोइडल रूल? ट्रेपेजोइडल रूल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to h by 2 integration bracket y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus y3 plus up to plus yn minus 1. मतलब अगर यहाँ पे yn है तो an minus 1 है, रिपीट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज h? h इज द स्टेप साइज जो कि कांस्टेंट होता है, दैट इज x0 minus x1 x1 minus x0 और x2 minus x1. अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा फिलहाल दिस क्वेश्चन के लिए दैट इज 0.01. नेक्स्ट, 2 जानते हो, y0 पता है, व्हाट इज yn? सो n इज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. n इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बी केयरफुल. 1 2 3 4 5 6. n इज नॉट इक्वल टू 6 बट सब इंटरवल मतलब ये एक इंटरवल हुआ, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल. सो n इक्वल टू 5. सो ये तो था ट्रेपेजोइडल रूल का जनरल फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन? सो दैट इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू h by 2 y0 plus yn, n इक्वल टू 5. सो y0 plus y5 plus 2 times y1 plus y2 plus y3 plus y4 n minus 1 मतलब 5 minus 1 मतलब y4. एक बात याद रखना, यहाँ से कोई भी वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक वैल्यू एट अ टाइम, सिंगल टाइम. नाउ h फॉर दिस क्वेश्चन h इज 0.01 by 2. वैल्यूज ऑफ y0 1.93 plus y5 that is the last value 2.06 plus 2 times unrepeated values, another values, y1 plus this plus this plus this, that is 1.95 plus 1.98 plus 2.01 plus 2.03, that is the last value of y4. So this is your data. Now calculations 0.01 by 2. आगे तो कैलकुलेशंस ही है. एडिशन करोगे इन दो वैल्यूज का आपको मिलेगा 3.99 एंड प्लस 2 टाइम्स इन चार का एडिशन आपको मिलेगा. ओके, इन चार को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 15.94. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 2, फाइनल आंसर इज 0.0996. That is your answer, integration a to b fx dx using trapezoidal. So use trapezoidal rule to find the integration, to find the value of integration from the given data. Thank you and Jai Hind.